Hello students, a very good evening to all of you. Welcome to my channel. This is a very important class on Know Your Text series part 15, and today we will talk about the last part of the summary of a portrait of the artist as a young man. But before starting, I want to give you a brief introduction about myself. My name is Brishti Mukherjee. I have qualified NTA UGC NET exam in English literature 4 times and have also qualified West Bengal SET examination. I have 2 years of teaching experience. Moreover, I have also taught in NPTEL online course from IIT Madras 3 times. So that is all about myself. This is the link of my Telegram channel. The link is also given in the description box. So those of you who have not joined yet, please join to get notification of all important classes. And also please don't forget to like, share and subscribe my YouTube channel so that many more new learners can join. And these are the timings of your classes: Monday to Friday at 8:30 p.m., Saturday, Sunday off. So don't forget to join me live. Please subscribe the channel and press the bell icon to get notification. Okay, so let's start. Today we will talk about the summary of the last part of a portrait of the artist as a young man. So let's start. We have already discussed up to chapter 4. Today we will discuss the last chapter, that is chapter 5. So in chapter 5 we have found in the last chapter we have already discussed that Stephen's father had decided to leave their house and to go somewhere else. So Stephen's family is in a very poor condition, that is seen in chapter 5, and they are so much poor that many household items must be sold for their survival. Good evening, Gitu. Welcome. Stephen feels very depressed hearing the screams of a mad nun from an asylum. This is important because, as you have read in the previous chapters, that Stephen tried to become a very religious person, and he was inspired by nuns and priests and other religious people. So Stephen feels very depressed when he hears the mad cry of a nun from an asylum. While walking towards school, he is reminded of many authors. He is reminded of many authors. He spends most of the time reading Aristotle and Aquinas. Reading Aristotle and Aquinas. He spends most of the time reading Aristotle and Aquinas. He is completely withdrawn from the whole world. This is a very important thing. We have already seen in the previous chapters also that Stephen has got isolated from the whole world, and it is a kind of voluntary alienation, you may say. It is a kind of voluntary alienation. Stephen himself tries to get withdrawn from the whole world. He reminds of his friend Cranley, and he recalls a Latin phrase: the orator summarizes, the poet profits transform. The orator summarizes, the poet profits transform. This is the Latin phrase. इसका इंग्लिश मीनिंग ये है कि ओरेटर का काम है समराइज करना, बट पोएट का काम है ट्रांसफॉर्म करना, एंड पोएट इज अ प्रॉफिट. This is a very popular notion in Greek literature also. In criticism also we have found the same thing, that poets are prophets. तो वही Latin phrase वो recall कर रहे हैं. Now, while wandering through the city, Stephen sees a statue of Thomas More. Thomas More means Thomas More is actually the national poet of Ireland. National poet of Ireland. That is why उनके statue के बारे में बात हो रही है. So he sees the statue of Thomas More, national poet of Ireland, but he is not very much respectful to him. Rather, Stephen thinks that Thomas More was a crude-minded peasant aspiring to be an artist. Very similar to what Robert Greene says about Shakespeare, an upstart crow beautified with our feathers. वैसे ही थॉमस मूर भी ये बता रहे हैं, crude-minded peasant aspiring to be an artist. He reminds of his rebellious friend David. He reminds of his rebellious friend David. Okay, so Stephen goes to his physics classroom and the dean is struggling to light a fire.
Dean means the dean of physics department. He is struggling to light a fire, and the dean asks Stephen about the definition of beauty. Now this part is much more philosophical. इसमें मेंशन है बहुत ही philosophical चीजें. गुड इवनिंग पापड़ी, वेलकम. तो फिलोसॉफिकल चीजें मेंशन है. ब्यूटी के बारे में स्टीफन इज गिविंग डिटेल्ड ओवरव्यू. Stephen quotes Aquinas, beautiful is which is pleasing and desirable. Beautiful means which is pleasing and desirable. That is his main point. During the conversation, Stephen realizes that he is alienated from the language. Stephen realizes that he is alienated from the language. तो इसमें एक important बात है. अब तक हमने देखा कि Stephen has been alienated from the society, from the social world, and also from the human civilization. But when he quotes Aquinas, Aquinas को वो quote करें, Aquinas का ये definition है कि beauty means which is pleasing and desirable. जो भी चीज desirable and pleasing है वही beautiful है. So during the conversation, Stephen realizes that he is alienated from the language. He cannot associate himself with the language, because alienation not only in terms of society but alienation also from mental perspective. तो लैंग्वेज भी उनके लिए एडिक्वेट अब नहीं लग रहा टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स. द क्लास बिगिंस बट क्रैनली इज एब्सेंट. Stephen's friend Cranley, he is absent. Another student arrives in the class, not inside the class but outside the class. McCann, a student, sits at a table collecting signatures for Tsar Nicholas II's petition for universal peace. ठीक है, वो पिटिशन साइन करवा रहे हैं. क्रैनली हैज ऑलरेडी साइंड. ही इज नॉट प्रेजेंट इनसाइड द क्लास बट ही हैज ऑलरेडी साइंड द पिटिशन. ठीक है. नाउ स्टीफन इज ऑल्सो रिक्वेस्टेड बाय मैकैन टू साइन द पिटिशन, बट स्टीफन considers the czar as an insane Christ. This is very important. This term is very important. Insane Christ. So Christ also appears to Stephen as insane. ठीक है. तो उनके जो डिसल्यूशनमेंट है, आगे हम बात करेंगे उसके बारे में. सो दैट इज फ्रॉम दिस रिलीजियस डिलेमा और रिलीजियस कंफ्यूजन. So Stephen considers the Tsar as an insane Christ and he refuses to sign the petition. ठीक है. तो स्टीफन अपने जो व्यू पॉइंट है वो डिक्लेयर कर रहे हैं कि he does not want to bound himself by nationality, language and religion. He does not want to bound himself by nationality, language and religion. So this is a very important thing to remember. Okay, तो ये स्टीफन बता रहे हैं कि nationality, religion, these are all appear to him as a very shallow kind of thing, जिसका डीपर अंडरस्टैंडिंग किसी को भी नहीं है एंड वो बस ऊपर ऊपर बात कर रहे हैं इसके बारे में. तो स्टीफन इज टॉकिंग अबाउट दैट. नाउ स्टीफन एंड लिंच उनके एक और दोस्त हैं. ठीक है. स्टीफन एंड लिंच दे शेयर देयर व्यूज ऑन पीटी एंड टेरर. Stephen and Lynch share their views on pity and terror. And Stephen, actually, this is the opinion of again Thomas Aquinas. ठीक है. तो थॉमस एक्विनस का ओपिनियन तो है, बट स्टीफन वो अपने तरीके से बता रहे हैं. आर्ट इज द सेंसरी प्रिजन ड्रॉन आउट ऑफ ह्यूमन बॉडी. एक्विनस ने सिमिलर बात कही थी, नॉट द सेम थिंग. स्टीफन उनको मॉडिफाई करके ये बता रहे हैं कि आर्ट इज अ सेंसरी प्रिजन ड्रॉन आउट ऑफ ह्यूमन बॉडी. वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट. So art is not something detached from human life. It is a part of human life and it is a prison of senses which is drawn out of human body. Beauty consists of sensibility and truth of intelligibility. This is important. तो ब्यूटी में दो चीजें हैं. ब्यूटी में एक है सेंसिबिलिटी एंड एक है मतलब ब्यूटी में सेंसिबिलिटी होता है एंड ट्रूथ में होता है इंटेलिजिबिलिटी. So truth is associated with intelligence and beauty is associated with senses. This is obviously you can understand that sense is associated with beauty. तो sensibility, sensible person हम उसी को कहते हैं जिसके अंदर aesthetic sense होता है. ठीक है. तो वही बात स्टीफन कह रहा है. And Stephen is also saying that to understand beauty,
structure of imagination must be understood. Imagination is very important to understand beauty, because if you do not have an imaginative sensibility, then you cannot discover beauty in the most ordinary aspect of life. ठीक है, जैसे देखो किड्स ने बताया था ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी. So he has discovered beauty in the in the most ordinary objects of our life, in the most ordinary parts of the whole world. तो स्टीफन वही बात कह रहे हैं कि ब्यूटी को समझने के लिए हमें इमेजिनेटिव होना बहुत जरूरी है. इमेजिनेशन मस्ट बी अंडरस्टूड. And Stephen is also saying that women are considered beautiful. It means that we feel attracted towards the reproductive ability of women. ये स्टीफन का मानना है कि women body, it is also an image of beauty or a symbol of beauty, and it is also associated with reproduction. So it means attraction towards reproduction. Women are considered beautiful because we feel attracted towards their reproductive ability, because ये ability सिर्फ और सिर्फ women का ही होता है to carry the child. That is why we feel attraction towards women. This is very controversial statement, but ये स्टीफन का मानना है. ठीक है. स्टीफन मॉक्स डोनोवन्स mundane interest. डोनोवन उनके एक और दोस्त है. ठीक है. एंड डोनोवन इज वेरी अफ्रेड, ही इज वेरी एंक्शियस ड्यू टू हिज एग्जाम रिजल्ट्स. उसके बारे में वो बहुत सोच रहे हैं. तो स्टीफन मॉक कर रहे हैं कि आप इसके बारे में क्यों सोच रहे हो. दीज आर ऑल मंडेन थिंग्स, दिस विल नॉट बी इम्पोर्टेंट थ्रू आउट योर होल लाइफ. तो अल्टीमेटली तो ये कोई भी कुछ भी इम्पोर्टेंस नहीं रखता. तो वाई आर यू थिंकिंग ऑफ दैट. नाउ दिस इज अ थ्योरी ऑफ एक्विनस. एक्विनस ने ये बताया था कि ब्यूटी के अंदर 3 कंपोनेंट्स होते हैं. वन इज होलनेस, हार्मनी एंड रेडियंस. तो ऑल 3 पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट. कि होलनेस मींस ब्यूटी मस्ट बी कंप्लीट. फ्रेगमेंटेड चीजों का ब्यूटी नहीं होता अकॉर्डिंग टू एक्विनस. थॉमस एक्विनस ने ये बताया था कि अगर हम कोई एक ऑब्जेक्ट को बता रहे हैं कि इट इज अ ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट, इट मीन्स दैट इट हैज अ कंप्लीट सेंस ऑफ ब्यूटी. देयर विल नॉट बी एनी काइंड ऑफ फ्रेगमेंट. देन हार्मनी. हार्मनी मीन्स कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है वो सब एक साथ मिलकर हार्मोनी क्रिएट करना है. जैसे देखो मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ पेंटिंग का. एक पेंटिंग का और एक ड्राइंग का. ठीक है. तो एक ड्राइंग को हम कहते हैं इट इज अ पीस ऑफ आर्ट, इट इज अ ब्यूटीफुल थिंग. तो व्हेन डज अ ड्राइंग बिकम अ ब्यूटीफुल थिंग? अगर उनके सारे एलिमेंट मींस द थीम व्हिच इट इज पोर्ट्रेइंग, ये एक एलिमेंट होता है. दूसरा एलिमेंट होता है उसके कलर. तीसरा एलिमेंट होता है द स्टाइल ऑफ ड्राइंग द पिक्चर. ठीक है. तो ये जो चीजें है ये कंपोनेंट है, ये एलिमेंट है एक ड्राइंग का. ठीक है. और एक एलिमेंट ये भी है कि द सेंसिबिलिटी ऑफ एन आर्टिस्ट. तो ये सभी चीजें मिलकर एक हार्मोनी क्रिएट करती है. ठीक है. एंड रेडियंस मीन्स द ग्लोरी ऑफ आर्ट. ये सब कुछ मिलकर जो एक इंप्रेशन क्रिएट होता है, दैट इज रेडियंस. तो दीज आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ ब्यूटी. एंड अगर कोई ऑब्जेक्ट ये तीनों चीज को फुलफिल कर रहे हैं, दैट मीन्स इट इज ब्यूटी. Stephen divides art in 3 forms: lyric, epic and dramatic. ये चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे फिलोसॉफिकल डिस्कशन हमें मिलता है. तो अकॉर्डिंग टू स्टीफन, लिरिक में क्या है? आर्टिस्ट इज द मेन थिंग. ऑब्वियसली लिरिक में जो लिरिक को कंपोज कर रहे हैं या फिर जो लिरिक को गा रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट. आर्टिस्ट इज मेन. एपिक में क्या है? एपिक इज सेट बिटवीन द आर्टिस्ट एंड द एक्सटर्नल वर्ल्ड. दिस इज इंपॉर्टेंट. लिरिक में देखो ज्यादातर लिरिक क्या होता है? पर्सनल होता है. ठीक है. तो इन अ लिरिक यू कैन एक्सप्रेस योर पर्सनल इमोशन. वो सिर्फ और सिर्फ उस आर्टिस्ट का है जो लिरिक कंपोज कर रहे हैं या फिर उस पोएट का है जो लिरिक लिख रहा है. ठीक है. बट एपिक में क्या है? एपिक में एक्सटर्नल वर्ल्ड का एक इन्फ्लुएंस रहता है. मतलब द प्लॉट ऑफ द एपिक which is based on a historical work, or which is based on something, uh, a particular battle or a particular dark side of history, और कोई एक पर्टिकुलर रिलीजियस कंट्रोवर्सी. तो एपिक में सिर्फ पर्सनल चीजें बताने की जगह नहीं होता है, इसमें आर्टिस्ट का भी रोल होता है. एट द सेम टाइम एक्सटर्नल वर्ल्ड का भी एक इन्फ्लुएंस रहता है. सो एपिक इज सेट बिटवीन द आर्टिस्ट एंड द एक्सटर्नल वर्ल्ड.
एंड ड्रामा क्या है? ड्रामा इज टोटली बेस्ड ऑन एक्सटर्नल वर्ल्ड. वो कैसे है देखो, बिकॉज ड्रामा उस टाइम में देखो जैसे लिखा जाता था, ड्रामा इज टोटली बेस्ड ऑन ऑडियंस, राइट? बिकॉज एपिक और लिरिक में देखो ऑडियंस का उतना इंपॉर्टेंस नहीं. आर्टिस्ट तो लिख रहा है, एक पर्टिकुलर थीम उसके हाथ में है जो एक्सटर्नल वर्ल्ड से आए हैं, बात खत्म. बट ड्रामा इज डिपेंडेड ऑन द ऑडियंस, बिकॉज ड्रामा उस टाइम में लिखा जाता था ओनली फॉर स्टेज परफॉर्म. तो एक राइटर, एक ड्रामाटिस्ट जब एक ड्रामा लिख रहे हैं, उसके दिमाग में ये बात भी ध्यान रखना होता था कि आई एम राइटिंग द प्ले दैट इज फाइन, बट विल इट बी एक्सेप्टेड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस. जैसे आज की दुनिया में जैसे फिल्म्स है, तो फिल्म्स आर टोटली बेस्ड ऑन द ऑडियंस, राइट? सपोज फिल्म का प्लॉट बहुत अच्छा है, एक्टर्स ने बहुत अच्छे से एक्टिंग किया है, बट फिर भी वो फिल्म ऑडियंस पसंद नहीं कर रहे, देन इट विल बी अ सुपर फ्लॉप, राइट? तो ड्रामा भी वैसी चीज है कि इट इज डिपेंडेड ऑन द ओपिनियन ऑफ द ऑडियंस. दैट इज व्हाई स्टीफन इज सेइंग दैट ड्रामा इज टोटली बेस्ड ऑन एक्सटर्नल वर्ल्ड. आर्टिस्ट का सक्सेस भी डिपेंड करते हैं एक्सटर्नल वर्ल्ड के ऊपर, कि ऑडियंस किस टाइप से इसको रिसीव करते हैं. अगर ऑडियंस क्रिटिसाइज करते हैं ऑथर को, भले ही वो ऑथर बहुत टैलेंटेड हो, लेकिन उसका टैलेंट हम एक्सप्रेस नहीं करते, हम उसके बारे में क्रिटिसाइज ही करते. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ ये स्टीफन का डिस्कशन हमने किया. नाउ एक दूसरे साइड में हमें देखने को मिलता है कि लिंच, स्टीफन्स फ्रेंड लिंच सीज ईसी द सेम ड्रीम गर्ल जिसका नाम एमा है. तो लिंच सीज ईसी स्टैंडिंग ऑन द स्टेप्स ऑफ आयरिश एकेडमी एंड शी इज फ्लर्टिंग विद द priest. Actually, this scene was seen by Stephen previously, and now when Stephen meets EC, he looks at her with contempt because he realizes that she is a hypocrite. Now, in the next part, we find that Stephen wakes up in a romantic, enchanted mood, dreaming of Emma. Stream of consciousness novel है, तो आप imagine कर सकते हो कि ये past चीजें बता रहे. He writes a few poems he writes a few poems addressed to her and Virgin Mary. दोनों पोएम्स के बारे में मतलब बहुत सारे पोएम्स वो लिख रहे हैं एड्रेस टू हर एंड आल्सो वर्जिन मेरी. सी हियर द डिस्टिंक्शन बिटवीन लव एंड रिलीजियन ब्लड्स, है ना? बिकॉज सेम पोएट्री जो वो एमा के लिए लिख रहे हैं, एक रोमांटिक पोएट, द सेम पोएम ही इज एड्रेसिंग टू वर्जिन मेरी. So it directly shows that religion and love, these two things are mingled up with each other, and इससे controversy, confusion create होता है. Yes, absolutely, Papdi. In drama, every individual voice gets equal chance to express. So it is not subjective like lyric. Yes, rather it talks about what is happening around. Yes, absolutely. Absolutely. Yes, so drama is about external world. ये बात तो है ही. And at the same time, drama में audience का भी role. That is why it is also external world. दोनों ही कारण के लिए हम बता रहे हैं कि drama is part of external world. Because audience को तो आप control नहीं कर सकते. Audience के दिमाग तो उनका है. तो एक एक पर्सन का अलग अलग इंटरप्रिटेशन हो सकता है. आप बस बना सकते हो फिल्म और ड्रामा विद द होप दैट ऑडियंस विल एक्सेप्ट. बट कभी कभी ये भी होता है देखो कि सपोज कोई एक डायरेक्टर हिस्टोरिकल फिल्म्स बना रहे कंटिन्यूअसली, उन्होंने 5 फिल्म्स बनाया है, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, 5 फिल्म्स उन्होंने बनाया है, तो 3 फिल्म्स बहुत सुपर डुपर हिट बन गया, लेकिन लास्ट 2 फिल्म्स नहीं चला. अब इसका रीजन क्या है? हिस्टोरिकल फिल्म्स ऑडियंस पसंद कर रहे इसीलिए डायरेक्टर बना रहे थे, लेकिन लास्ट 2 फिल्म्स किसी भी कारण की वजह से वो नहीं चला. तो इसका मतलब क्या है? डायरेक्टर फालतू है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसी सेम डायरेक्टर का 3 फिल्म्स सुपर डुपर हिट है. तो इट इज कंप्लीटली आर्बिट्रेरी कि ऑडियंस को कौन सी चीज अच्छा लगेगा, कौन सा नहीं लगेगा. दैट इज व्हाई ड्रामा फिल्म्स दीज आर पार्ट ऑफ एक्सटर्नल वर्ल्ड. एंड यस, यू हैव आल्सो सेड इट करेक्ट दैट ड्रामा में डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज बताने का एक स्कोप होता है जो लिरिक या एपिक में कम है. यस, दिस इज आल्सो अनदर रीजन. ओके, तो चलो हम वापस आते हैं नॉवेल में. तो ही राइट्स अ फ्यू पोएम्स एड्रेस टू हर, दैट इज एड्रेस टू हर एंड आल्सो वर्जिन मेरी. Stephen remembers talking with EC in the party. Past memories वो recall कर रहे हैं. EC asks him to play piano and sing.
That flirtation fills him with anger. To him, she represents the womanhood of the country. He remembers the poem he has written 10 years after. He remembers the poem he has written 10 years after. Okay. Stephen stands outside the library staring at a flock of birds. एक दूसरे पार्ट में हम ये देखने को मिलता है कि Stephen is staring, Stephen is looking outside and he is trying to forget his fight with his mother. अब इस फाइट का क्या कारण है वो हमें बाद में पता चलता है. एंड स्टीफन इज ग्रेजुअली गेटिंग डिटैच्ड फ्रॉम रियलिटी, फ्रॉम सोशल वर्ल्ड. एवरीथिंग अराउंड हिम reminds him of literature and philosophy. Okay, so his anxiety is replaced by eagerness of departure. He recalls his experience of watching W.B. Yeats's The Countess Kathleen. यस, तो डब्ल्यू बी येट्स द काउंटेस कैथलीन. तो देखो इस टाइप के माइनर क्वेश्चंस आते हैं कि व्हिच प्ले ऑफ डब्ल्यू बी येट्स इज मेंशन्ड इन जॉयसेस पोर्ट्रेट. कभी कभी आते हैं एकदम बिटवीन द लाइन से. तो याद रखना कि इस नॉवेल में जो प्ले का नाम मेंशन है वो है द काउंटेस कैथलीन. एंड स्टीफन रिकॉल्स द सीइंग ऑफ काउंटेस कैथलीन. मेनी पीपल हैव फाउंड द प्ले अनपेट्रियोटिक. देखो अभी जो बात मैंने बताया है कि ड्रामा इज टोटली बेस्ड ऑन ऑडियंस. So many people have found the play unpatriotic, but Stephen likes the play. Stephen finds Cranley in the library discussing chess problems with medical students. A group of students are gossiping about a priest's extramarital affair. Again, religion is satirized. Cranley greets Emma while walking out of the library, and Stephen feels very shocked, not shocked exactly, Stephen feels suspected that Cranley may like Emma. He may also have an affair with Emma. He recalls lines from a poem on darkness. ठीक है, एग्जैक्ट पोएम का नाम मेंशन नहीं है, बट अ पोएम ऑन डार्कनेस. एंड ही कंटेम्पलेट्स ऑन एलिजाबेथन पोएम्स. एलिजाबेथन लव पोएम्स के बारे में स्टीफन सोच रहा है. But Stephen realizes that literature also cannot help him to understand EC. Literature also cannot help him to understand EC. Stephen tells Cranley about his fighting with his mother. His mother wants him to participate in Easter duties, but he is not willing. His mother wants him to participate in Easter duties, but he is not willing to participate. That is why एक feud create होता है between Stephen and his mother. Stephen admits that he has failed to love God. Cranley says that a mother's love is more real than any idea. Cranley उनको थोड़ा सा कंसोल करने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है. Stephen recalls Christ and other religious figures who had never misbehaved with their mothers. So is it justified for him to do so? Stephen अपने आप को ये क्वेश्चन कर. And Stephen is very sad because he has to leave Ireland very soon. As ये लास्ट चैप्टर से ही हम ये देख रहे थे कि स्टीफन प्लान कर रहे हैं लीव करने का. And Stephen basically wants to live a free life as per his own choice, out of the bondage of religion, nationality, study. सबसे बाहर जाकर वो बचने की कोशिश कर. The last part of the novel forms a diary. Last section of the novel is diary में स्टीफन बता रहे हैं अपने कुछ important episodes के बारे में, like everything of his long conversation with Cranley. उसके बारे में वो बात कर रहा है. एमा इज प्रोबेबली वेरी सिक. ठीक है, इसका एक रेफरेंस हमें मिलता है थ्रू स्टीफन्स डायरी. एंड स्टीफन ऑल्सो डिस्क्राइब्स द रिलीजियस आर्गुमेंट विथ हिज मदर अबाउट वर्जिन मेरी. ये भी है. स्टीफन डिस्क्राइब्स टू डिस्टर्बिंग ड्रीम्स. दोनों ड्रीम्स के बारे में वो बता रहे हैं. फर्स्ट ड्रीम इज, ये नंबर 1 ड्रीम है, ही इज स्टैंडिंग इन अ castle full of statues and the kings are staring at human form. Very a different kind of dream, right? And dream 2 में वो देख रहे हैं transparent people. This is very interesting. Transparent people are coming out of caves and stares at Stephen without speaking. Something eerie, horrible kind of thing. तो ये वो देख रहा है. It is totally an act of disillusionment
एंड फाइनली नॉवेल एंड होता है, ये डेट याद रखना, ऑन 27 अप्रैल द नॉवेल एंड्स, ही लीव्स आयरलैंड फुल ऑफ जॉय एंड फन. So leaving Ireland is a kind of liberty for him. तो ये था नॉवेल का समरी. अब अगर हम इसके मेजर थीम्स की बात करें, तो एक थीम आप कह सकते हो थीम ऑफ रिलीजियन, एंड उसके अंडर में कुछ कंट्रोवर्शियल चीजें हमें देखने को मिलता है, लाइक द थीम ऑफ सोल एंड बॉडी. ठीक है, द थीम ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस, थीम ऑफ एस्केपिज्म, जो अभी हमने बताया कि आयरलैंड अपीयर्स टू बी अ वेरी क्लॉस्ट्रोफोबिक एग्जिस्टेंस फॉर हिम, ही इज ट्राइंग टू गो आउट ऑफ दैट. ठीक है, तो इस टाइप का थीम है. और एक थीम है कि स्टीफन लॉस ऑफ चाइल्डहुड एंड गेनिंग ऑफ मैच्योरिटी. इस टाइप का एक थीम आप बता सकते हो. एंड ऑल्सो इट टॉक्स अबाउट डिसल्यूशनमेंट, जो तो जॉयस के हर नॉवल में है. ठीक है, डिसल्यूशनमेंट, एपिफैनी, दिस इज ऑल्सो अनदर थीम. एंड यू कैन ऑल्सो से द controversy between sin and virtue, जो religious themes के अंदर ही आते हैं. जैसे स्टीफन, when he gets intimate with the prostitute, he cannot decide whether it is right for him or wrong. So this is these are the major themes which you can definitely focus on. Yes, absolutely right, Papi. That is why it is talking about the development of an artist. An artist should not follow any kind of boundary, whether national or religion. Yes, you are right. So that is why Stephen leaves Ireland full of joy and fervor to pursue a different career where nothing can bound him. ठीक है, so this is about the portrait. We have completed the summary, plot summary. तो इसका summary करना बहुत ही difficult है, because it is a stream of consciousness novel, thoughts का इधर उधर हो रहा है. But still I I hope I am clear in the summary to you. Okay, so this is about the summary. And अगर आपके पास time है तो आप novel को detail में भी पढ़ सकते हो. The reading will be confusing a little bit, but it will be delightful. जैसे आपको summary पहले ही पता है तो आप easily identify कर सकते हो. ठीक है, so that is the end of today's class. Thank you all for joining. This is the link of my Telegram channel. The link is also given in the description box. So those of you who have not joined yet, please join to get notification of all important classes. So tomorrow I will not be able to take any class. Your next class will be on Wednesday at 8:30 p.m. We will discuss a new topic. So don't forget to join me live. Please subscribe the channel and press the bell icon to get notified. Okay, so thank you all. Bye bye everyone. Good night. See you all Wednesday at 8:30 p.m.